Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. 𝐶𝐚𝐭𝐬𝐀 and we're going to be talking about, have you joined our journey of 30k to 3 lakh or not? If you haven't joined, the only way to join that is to join us on the Telegram channel, where we are giving you short way to earn money. We do our research. You have to only practice for buy and sell. Like today, we gave early morning Force Motors, we gave you Ease My Trip, we gave you a lot of stocks which gave beautiful movement. People have booked good amount of money. And if you don't know where is my channel, you can join us from the description box below. There are numbers given for all my team. You can talk to them, or the link you can join through the link. You can join us on the Telegram channel. Now, you have to practice first. You have to first practice to enter in a stock, take 2-3 points and exit. As I've told you, a good amount of money is about 1500 rupees. Per trade, you should make 1500 rupees because you're spending time and you need to give some kind of brokerage. So that means if you have 1500 rupees, you'll be able to save some 1000 plus rupees in a trade, which is a good amount of money. Now, in this video, I will be talking about, some Nifty and Back Nifty, and also I will be talking about some FNO stocks. I'm making another video where I'll be talking about purely the cash stocks, which could be positional trades, and keep them on radar. Whenever the given levels break, you can trade into them. So start करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बैक निफ्टी की. So this is Back Nifty's long term chart जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है. मैंने इसमें एक मेन चैनल बना रखा है और एक और सब चैनल बना रखा है, और आज बैक निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया. If you notice, Back Nifty has exactly taken support from the same levels. So now what could be the stats? By looking at this, the price rejection and everything, Back Nifty looks positive, and I just scanned the whole market. I felt a lot of stocks look positive. Back Nifty components are looking positive, but some of them are a little under stress, right? And let's have a look at what's happening in the Back Nifty's option chain. So here is Back Nifty's weekly option chain, and if you will notice here some important points that you can notice, that I'm going to take the pencil here and just see here, there is huge amount of call writing that has happened at the level of 4200, 42200. At the same time, on the put side, if you see the open interest change, a lot of put writers have moved in the upper direction. So it simply shows there's in the money put writing happening. That means people believe that Back Nifty is going to be positive. I hope you're understanding. There's huge amount of call writing which has entered at the level of 42,000 as well. So 42,000 is going to be a very, very strong resistance zone. There could be a possibility. Today is Monday. Let's see how the dynamics change tomorrow. Today, huge amount of call writings have happened, but more call writing happened at the level of 4200, 42,200. Almost like 50% call writers have increased at the 42,200 level. Whereas if I look into the put side, a huge put writing is happening at the level of 42,100 here and 42,200. So as far as Bank Nifty is looking to me, I feel that the Bank Nifty's range is going to be very narrow. It's not going to be huge movement that you can expect. But if I look into the option chain of Nifty, अगर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखती हूँ, मुझे बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती है. मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीजें हैं ऐसी जो मुझे देखने को मिल रही हैं, और आप भी देख सकते हो उसको, और उसको देख के आप अपना कुछ माइंडसेट बना सकते हो. पुट साइड में देखो आप कितना ज्यादा कॉल पुट अनवाइंड हुआ है, कितना ज्यादा पुट अनवाइंड हुए हैं, राइट. कॉल साइड में आप देखोगे इस जगह पे कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है. अगर आप नोटिस करते हो ओआई चेंज की बात अगर हम करें, तो कॉल में कितना ओआई चेंज हुआ है, पुट में कितना ओआई चेंज हुआ है. तो लेट्स काउंट इट हियर. 15 लाख ये है, दिस इज 15 lakhs, this is 31 lakhs, this is 21 lakhs, 19 lakhs, 13 lakh, 18 lakh, 14 lakhs, right? If I add up all of it, 45
+20 65 +20 85 +30, which is 1 crore 15 lakhs and 1 crore 30 lakh. Those are the contracts written on the call side. And the put side, what is happening? Unwinding is happening. So that means write it in the comment box. What do you understand by this? Call writing increase हो रही है, put writing unwind हो रही है. इससे आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या लगता है निफ्टी में क्या होने वाला है? तो निफ्टी लुक्स वेरी वेरी वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और एक और मैं बात आपको बोलना चाहती हूँ कि जब मार्केट में निफ्टी नीचे जाने को तैयार है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है, तो आप समझिए मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा. तो थोड़ा केयरफुल ट्रेडिंग करनी है आपको. और जिस तरह से हमने बात की है निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट की, उसी तरह हम बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट के भी और समझते हैं वहां से कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है. सो दिस इज निफ्टीज फ्यूचर, राइट. अगर आप देखेंगे निफ्टी के फ्यूचर के लिए भी मैंने एक बहुत नैरो चैनल बना रखा है. निफ्टी उसी चैनल में चल रही है. एक दिन निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक किया था और नेक्स्ट डे फिर से गैप अप दी थी. अगर हम कलेक्टिवली इन 3 कैंडल्स को देखते हैं, लेट मी जस्ट मार्क दोस 3 कैंडल्स फॉर यू. अगर हम इन तीनों कैंडल्स को देखते हैं तो निफ्टी का स्टांस पॉजिटिव है. कल अगर अपने हाई को निफ्टी ब्रेक कर देती है तो निफ्टी ऊपर चल देगी. बट अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो एक पॉसिबिलिटी है इसको ये 18,200 के लेवल तक आने की पॉसिबिलिटी है निफ्टी को. तो what I'm trying to tell you here is कि निफ्टी में थोड़ी इनडिसाइसिवनेस ज्यादा है, बट डेटा को देखते हुए लगता है कि निफ्टी को नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है देन ऊपर जाने की. बट देखते हैं मार्केट में क्या होता है. डायनेमिक्स चेंज कंटिन्यूसली. बट एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि मेरा माइंडसेट हमेशा बुलिश होता है. तो मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों के लिए एफएनओ में निकाले हैं. पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा. सिंपल सा रीजन है जीएमआर इंफ्रा का कि जीएमआर इंफ्रा ने बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया. ये जीएमआर इंफ्रा का कंसोलिडेशन रेंज था. फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया. उसके बाद ये लगातार इनसाइड कैंडल बन रही है इन जीएमआर. तो अगर 39 के ऊपर जीएमआर जाता है तो एक 40, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक. ये मुझे बहुत पसंद नहीं है स्टॉक, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट आता ही नहीं है. मतलब सालों सालों महीनों महीनों कोई मूवमेंट ही नहीं आता है. ये यही 40 42 43 पे घूमता रहता है. तो जब स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं आता ना, तो आई गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटेड. सो आप देखो इसमें कितने समय से ये यही रेंज चली जा रही है. 3-4 पॉइंट्स में ये घूमता रहता है. बट एनीवे टेक्निकली अगर हम देखें स्टॉक को तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट आएगा अबव 39 के ऊपर. मुझे जीएमआर इंफ्रा में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है और एक टारगेट जो है आता हुआ दिखता है कुछ 40-41 का. 2 पॉइंट का टारगेट है. बहुत छोटा सा स्टॉक है. 2 पॉइंट मीन्स 5% का मूव आता हुआ दिखता है. बट यू गॉट टू बी केयरफुल बिकॉज दिस स्टॉक डजंट मूव मच. फिर मेरे रडार पे है हेवल्स जो है लगातार डेवलप हो रहा है. लगातार इसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है. ये द डेटा which I'm reading the candlestick pattern over here. But if I look into the open interest data, there is continuous increase in the open interest. The price is increasing, the open interest is increasing, but the breakout is not coming. So I'm waiting for a strong breakout to come. इसी बात को हिंदी में बोलती हूँ कि इस स्टॉक में हेवल्स में ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. प्राइस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बट ओपन इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हो रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं आ रहा है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग जिस दिन ब्रेकआउट आएगा एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी है. ओके, अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं स्टॉक को, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट फॉर्मिंग लाइक अ डबल बॉटम, स्क्यू डबल बॉटम. तो अगर 1245 के ऊपर जाता है हेवल्स तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है. इस स्टॉक में एक अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है. फिर मेरे रडार पे है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस. I'm okay to buy it, but the fact there is a close by resistance. आप देखिए यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स है. बहुत सारी कैंडल्स ऐसी बन रही है जिनमें कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है. स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे आया है. तो इसमें अगर ब्रेकआउट आता भी है तो मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट ऐसा नहीं लगता है कि आएगा. बट स्टिल अगर आपको एक छोटा मूवमेंट कैप्चर करना है तो 137 के ऊपर बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 140, 141, 142 का. और स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 135 का. या
एंड लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, वो है IEX। IEX को अगर आप थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और ऐसा लगता है कि अबव 148 IEX में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो और स्टॉक है मेरे रडार पे, एक लॉरस लैब और एक लुपिन, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपने रडार पे रखिए, अगर आपको एक अच्छी पॉसिबिलिटी मिलती है एंट्री की, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, so in front of you is the Loris Lab graph, which I just want to draw the trend line for you in the daily time frame. Ignore these few candles which have gone out, but अगर आप नोटिस करते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनी है और एक स्क्यूड डबल बॉटम बना है। तो मुझे लगता है कि अबव 470, 471 there could be a good opportunity for entry till about 480 and you can definitely take an entry। and अगर आप देखते हैं तो एक डबल बॉटम भी बन रहा है स्टॉक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 480 को क्रॉस कर जाता है स्टॉक, तो हमें 20-30 पॉइंट्स का मूव इसमें आराम से आता हुआ, 40 पॉइंट्स का मूव इसमें आता हुआ आराम से दिखेगा। सो ये एक स्टॉक है जो कि मेरे रडार पे है और आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट FNO स्टॉक्स। सो बी केयरफुल बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि निफ्टी बैंक निफ्टी looks weak, bank nifty looks indecisive. If they both are not in sync, you will probably find confusion in the market. So wait for clear signals. But as I told you, I'm always on a buy side. So I've given you my stocks. They are GMR Infra. Havels look extremely good. Like if you ask me to give the numbers, the first number will be given to Havels. Second will be given to GMR Infra. Third will be given to IEX, and fourth will be given to Dollar Snap. And IBUL Housing will be the last one. So this is how I will rate them. And yeah, so keep them on your radar. These are like I'll give this. Even for that matter, I'm finding Crompton Brief good. I'm finding Dixon very good. I'm finding Federal Bank very good. But let's see tomorrow how it goes. I've given you my best selection, which I felt will be good. My first priority will be Havens. So keep it on radar and all the best. And if you like my content, give a thumbs up, share it with others. Do join me for live trading every day from 10 to 11 and ask your all the friends also to join me for the live trading. With this, I'll be signing off, your host, Dr. Seema Jain, and it's my pleasure to be making a video for you all and sharing my thoughts because this is the best time for me. All the best. Take care. See you.